ब्रह्मा च लोकाधिपति सहम्पति कतंजलि अंधिवरम अयाचता संतिधा सत्तापराजखा जातिका देसेतु धम्मम अनुकंपिमम भजम. So this evening Luang Por Liem has invited Luang Por Jundee to answer questions if there are questions still, otherwise he'll just give some reflections. Come. 'Venerable, I was speaking to you today in the morning and I was asking you that small question which I'd like to ask Luang Por Jundee. Basically, I was just wondering, yesterday in your talk you said that our mind has no attachment to anything, bodily, mentally or physical thing. But as we take a new life, our mind is attached to our karma, because we are carrying it from one life to the other to the next. So what is that attachment? How are we attaching the karma to our mind? Or what is it that we are attaching it to? ขอโอกาสหลวงพ่อครับเมื่อวานนี้โยมได้ยินหลวงพ่อพูดถึงว่าจิตที่ไม่มีความผูกมัดหรือความยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยกับร่างกายกับสรีระเขาก็สงสัยหากว่าสิ้นชีวิตแล้วก็หากว่าไม่มีการผูกมัดอะไรก็เราจะมีมันเป็นยังไงกันแสดงออกถึงกรรมต่อไปมันมีกระบวนการยังไงหากว่าเราไม่ยึดถือกับร่างกายก็อะไรเป็นส่วนที่ เป็นที่ตั้งมันของกรรมต่อไปในชาติต่อครับผมอันนี้พูดถึงสภาวะของจิตใจเมื่อมันไม่มีสิ่งที่เกี่ยวข้องผูกมัดนะถ้าเป็นภาษาของพระอริยเจ้าท่านก็ว่ามันหมดใช่ไหมมันหมดไม่มีเชื้อที่จะต่อไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างรวมหมดทุกหมดกรรมเพราะมันไม่มีอุปาทานความยึดความมั่นความหมายเนี่ยที่เราสาธยายเนี่ยเหตุของความทุกข์ต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นจากอุปาทานนะการละถอนอุปาทานความยึดมั่นหมายมั่นได้นะมันก็เลยเกิดความเบาหมดว่างนะแม้ปัจจุบันเองนะที่เราอาจจะสัมผัสได้นะถ้าจิตใจของเรานะไม่ยึดมั่นหมายมั่นนะมันก็เกิดความว่างเกิดความเบาที่จิตใจนะจิตใจไม่หนักสังเกตดูว่าจิตใจของเราถ้าว่ามันหนัก
ที่เราเรียกว่าหนักใจนะนั่นหมายถึงว่าจิตใจนั้นมันมีความยึดมั่นมี attachment ใช่ไหมมียึดมั่นนะถ้ามันไม่ยึดมันก็เกิดความเบาเขาเรียกว่าเบาใจขึ้นมาเนี่ยนี่แต่เรื่องอนาคตกับปัจจุบันมันมีความสัมพันธ์กันเนี่ยถ้าปัจจุบันมันทำให้หมดได้เบาได้อนาคตมันก็เบานะฉะนั้นปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญถ้าย้อนมาถึงคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยพระองค์ก็มาย้ำที่ปัจจุบันธรรมอนาคตไม่ต้องคำนึงถึงถ้าปัจจุบันนี้มันเป็นเหตุของมันนะถ้าเหตุที่จะทำให้เกิดความยึดมั่นหมายมั่นมันก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนะจะทุกข์มากทุกข์น้อยก็อยู่ที่ปัจจุบันนะนี่ถ้ามาตั้งปัจจุบันไว้ให้ดีแล้วนะอนาคตก็ไม่ต้องคำนึงถึงกรรมมันก็จะหมดในปัจจุบันนี้แหละแต่มันหมดความยึดมั่นหมายมั่นนะ So to speak of the mind that is which is attached to the world and a cause for rebirth, when there ceases to be a cause for rebirth, in the language of the noble beings, enlightened beings, is that there is an end to the fuel for more becoming. And that means an end to suffering and an end to being subject to karma. Because there's been an end to upadana, or attachment and clinging. And so we chant that we should abandon attachment and identification. And when we don't attach, then instantly, in the present moment, there will be lightness. We'll experience lightness when we're not grasping onto things. And as for completely abandoning all attachment, well, there's a link between the present and the future, and we know that actions in the present are a cause for the future. And so if we can abandon attachment in the present, then the future, our load will be light. And the Buddha taught that we should focus our mindfulness in the present moment, and rather than being overly concerned about the future, we should put the good causes into our practice in the present, which means to gradually let go of upadana, attachment. And whether we have a lot of suffering, whether we'll have a lot of suffering in the future or a little bit of suffering in the future, all depends on what we do in the present. And so if we are diligent in our practice in the present, then we have the opportunity of coming to the end of attachment, of suffering and being subject to karma in the future. แต่ต้องฟังให้เข้าใจนะอย่างหลวงพ่อชาแต่ว่าถ้าเป็นภาษาโลกถ้าบอกว่าให้วางทุกอย่างไม่ให้ยึดมั่นหมายมั่นก็จะเข้าใจยากนะท่านก็เลยบอกว่าเอาเป็นว่ายึดแต่อย่าให้มั่นยึดอย่าให้มั่นนะหมายความว่าเราอยู่กับโลกนี่เหมือนเราหยิบแก้วขึ้นมาเนี่ยหยิบแก้วขึ้นมาเพื่อดื่มน้ำเสร็จก็วางลงนี่
มันก็ไม่หนักใช่ไหมนี่ก็เรียกว่ายึดแต่ไม่มั่นมีปัญญารู้เท่าทันพร้อมที่จะวางนะนี่ก็เรียกว่าลักษณะนี้จิตใจมีอิสระมีอิสระต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะอย่างโยมได้ของมีของก็มีได้นะแต่ว่าจิตใจไม่ได้เป็นทาสของสิ่งนั้นจิตใจมันอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นแต่ก็ปฏิบัติหน้าที่กับมันตามหน้าที่ในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่นะแต่พร้อมที่จะวางท่านจึงเรียกว่ายึดแต่ไม่มั่น So it's difficult to speak of and describe a state where a process and a state where every kind of attachment has been fully abandoned. But we can understand in simple terms about how we should practice in the present. So that means that we take hold of things, but we don't grasp and cling to them. Or we take hold of things, but we don't hold on to them tightly. We make use of things, but we're ready to let go of them. Or we pick things up, but we're willing to put them down. So if you pick up a glass from the table, and you'll feel its weight and it's heavy. But then when you put it down, it's not heavy for you anymore. So all the things that we accumulate in the world, we might think it's good and useful to have this and to have that, but we should be aware that all those gains bring a weight and a burden that the mind will have to carry as well. Unless we're simply aware of using things for their benefit without attachment, just using things for their use, but ready and willing to put them down and let them go at any time. Bhante, here I have a question. Bhante, my greetings. My question is, will the tradition ever be open to ordination for women? And if not, then may I please know why not? Thank you. ขอการ หลวงพ่อโยมถามว่าสายเราในอนาคตจะมีวันใดวันหนึ่งไหมที่เราเปิดโอกาสให้สตรีได้อุปสมบทครับผมเรื่องนี้มันเป็นปัญหายืดเยื้อยาวนาน มาแล้ว อาตมาก็รับประกันไม่ได้เหมือนกัน ในเรื่องอนาคตก็อย่าไปคิดอะไรมันมากนะการปฏิบัตินั้นจะอยู่ในเพศภาวะใดก็ตามนะถือเอาการปฏิบัติอันนั้นมันเป็นรูปแบบอย่าไปติดรูปแบบมากนะถ้าติดรูปแบบนี้มันจะทำให้เราวิตกกังวลนะเราไม่เป็นอันที่จะทำในสิ่งที่ควรทำคืออยู่ในเพศภาวะใดก็ตามธรรมะนั้นไม่ได้กีดกันนะเพศหญิงเพศชายเพศนักบวชหรือไม่นักบวชก็แล้วแต่นะแต่ว่าก็สามารถปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ได้อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะถ้าบวชมาแล้วถ้าไปยึดมั่นหมายมั่นเพิ่มทิฏฐิมานะขึ้นมันก็ไม่ใช่นะสู้คนไม่บวชก็ไม่ได้นะ
นี่ถ้าเรารู้จักวางเหมือนที่พูดเมื่อกี้ว่ารู้จักวางสิ่งนั้นเสียรูปแบบข้างนอกวางเสียเอาแต่ธรรมะปฏิบัติธรรมแต่ว่าปฏิบัติธรรมมันไม่ต้องมีเพศไม่มีรูปแบบเนี่ยมันจะสบายใจกว่านะแล้วเราก็มีเวลาที่จะได้ปฏิบัตินะถ้าอย่างนั้นเราก็จะมีแต่ความอยากนะอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่นะซึ่งมันจะเป็นตัวขัดขวางหนทางเดินของเรานะปล่อยตรงนั้นเสียเราเอาปฏิบัติธรรมล้วนๆเท่านั้นแหละทำกายให้มันดีวาจาให้มันดีจิตใจให้มันดีเนี่ยเหมือนคุณสมบัติของพระสงฆ์ที่เราได้สวดสาธยายนะสุปฏิปันโนนั่นคือคุณสมบัตินะปฏิบัติดีนะปฏิบัติดีมันเลือกเพศนะเลือกภาวะหรือมันไม่เลือกนะใครทำดีก็ได้ดีหมดแหละนะสุปฏิปันโนปฏิบัติดีผู้หญิงก็ปฏิบัติดีได้ผู้ชายก็ปฏิบัติดีได้นะเป็นญาติโยมนักบวชนะก็ได้เหมือนกันเพราะมันเป็นคุณสมบัตินะปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยตัวนี้มันไม่ได้กีดกันเนี่ยไม่ได้กีดกันไม่อยู่ที่เพศไม่อยู่ที่ภาวะอะไรเลยเนี่ยมันธรรมะเรียกว่าเปิดทางให้เราได้เดินได้ทุกเพศทุกวัยสนใจตรงนี้ดีกว่า The issue of ordination, bhikkhuni ordination in Theravada Buddhism has been an issue for a long time, and I don't know how, when, where it will be resolved. But in terms of practice, it might be better not to think too much about the status or identity, but to think more about practicing the Dhamma, because both male and female can practice the Dhamma, and both male and female can attain to the Dhamma. And if we are too concerned with identifying with status as male or female, or as ordained or not ordained, or this kind of ordination, that kind of ordination, then that's not really the right path. That's a path of being and becoming and desire for becoming. So we should know how to put this down as well and aim to practice the Dhamma without gender, and that practice is available to all. So be aware that desire to become this or that is also a form of craving. And when we practice, we should put down our craving and then get on with the practice. So, supatipanno, one who practices well, that doesn't specify gender, doesn't specify ordained or not ordained status. It's something that both men and women can do. It's something that both lay people and ordained Sangha can do. And so, supatipanno, one who practices well, ujjupatipanno, practicing directly, and samicchipatipanno, practicing appropriately to conditions. This is a path that all can walk. Just on this topic, I would like to add a little bit, because, as Luang Por Jundee said, it's something that is very difficult to say when this issue will be settled. Our main focus in our tradition is to keep the harmony, particularly if we are foreigners to the tradition, or like a group that is a subgroup like the forest tradition in a bigger Sangha, so that's our main motivation. And in so to say, as a way out for providing good opportunities for
women to ordain and practice, but not using the form of the bhikkhuni ordination, which is still in our country, Thailand, very controversial. So as a way out, Luang Por Sumedho has a long time already tried to introduce a form of ordination for women, which takes on the full renunciant precepts and practices, in fact, in a very similar form to the bhikkhus, taking on voluntary practices that would correspond to what the bhikkhunis have been doing. And so this is like, it's not that we are not trying to offer a path of renunciant practice, samanahood, in our own lineage particularly. And if I may say, for us it's a very difficult path in a bigger context of a bigger Sangha, and where we try to keep the harmony, and particularly in various shades of the discussions, not to, from our side, be somebody who creates this harmony in the already very difficult situation to unite a bhikkhu sangha. So this is one of the ways out that Luang Por Sumedho has founded in England, in Amaravati, Chithurst, the Siladhara order, which formally the nuns are taking the 10 precepts. That means they're renouncing possessions of money and practicing mainly in the same form as alms mendicants, with alms bowls and the robes equal to what the bhikkhuni robes would be. And I think you had the opportunity to meet one of our senior nuns. She's ordained, I think, about 40 years already. And so it's actually something that particularly we had like put in quite a lot of thought and effort before the whole very controversial discussion took place, and for some reason it has been still not been fully recognized, in that sense that on a personal level we would like to see that women have the opportunity to fully lead a renunciant life in the robes, with all the requisites and equipments, both by the precepts and by the practices, equal to the monks in our Sangha. So this is my little contribution. ขอโอกาสผมได้เสริม ไว้รูปแบบของเราพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุเมธได้เปิดทางเพื่อจะหลีกเลี่ยงการขัดแย้งภายในสงฆ์ใหญ่ก็ท่านได้ก่อขึ้นให้มีสมณะสารูปได้กระจายถึงสตรีที่จะบวชในระดับนี้ได้เพื่อจะได้มีเครื่องมือในการปฏิบัติเป็นสมณธรรมปฏิบัติสมณกิจได้ตามข้อวัดหรือตามศีลธรรมการเสียสละรวมกับการไปบิณฑบาตแล้วก็การสละเงินทองทรัพย์สินสมบัติเสมือนพระภิกษุก็ แต่ไม่ได้เป็นอันว่าเป็นการภิกษุณีการอุปสมบทเป็นภิกษุณีได้เสริมข้อมูลได้นี้ครับผมนั่นแหละถ้าสังคมยอมรับมันก็ไม่มีปัญหา I have a practical question. A, B and C are 3 persons. A is immature in intelligence and logic, may be taken under 18. B is fully developed, fully matured in intelligence as well as logic. C is already lost his maturity, that means very old age. These 3 persons are doing actions in 3 ways.
one is mentally, another is by speech, another is by body, and the fourth one by telling to three persons X, Y, and Z, advising, abetting, and directing under authority. And the states are three: consciously, subconsciously, unconsciously. Under this situation, how the responsibility spiritually be evaluated for each and every person? I think I have to see. Three persons, once again I would like to tell, three persons. One is under 18. He is not fully developed in his intelligence as well as logic. The second one is developed. He is fully developed in intelligence as well as logic. The third one has already lost his maturity, that means a very old age. These three persons are doing actions mentally, another by speech, third one by body, and fourth one by another person. Another person may be XYZ, and by advising to X, by abetting to Y, and by directing to Z. And these actions are done in three states of mind: consciously, subconsciously, unconsciously. Under these circumstances, the responsibility of action, how spiritually evaluated for these persons? Spiritually evaluated. We are making them responsible for their actions, so therefore I would like to know how it is evaluated, to what extent they will be responsible. Okay, whether, for example, somebody is intelligent, not the A1 is not developed. A child, it may be under 18, so he is not fully developed intellectually as well as logically. I think I can only give the topic generally to Luang Por to comment. As it is. As far as I understand. หลวงพ่อเขายกตัวอย่างมีบางคนก็ที่ไม่มีสติปัญญาเต็มที่ก็ไม่ได้พัฒนาสติปัญญา100%แต่บางคนก็มีพรสวรรค์ลักษณะนี้ก็มีทักษะมีความฉลาดมี IQ แล้วก็อีกบางคนก็มักจะเป็นลักษณะว่าผู้เฒ่าแล้วเคยเป็นอย่างนั้นแต่เสียสติแล้วเพราะว่าอายุสูงแล้วก็ทั้ง3คนก็เขาจะประพฤติปฏิบัติโดยกายวาจาใจแล้วก็เขาไม่แน่ใจว่าสำหรับจิตใจทั้ง3เสมอกันไหมหรือมันมีการต่างกันไหมแล้วก็อีกคนที่4หากว่าเขาสามารถแนะนำทั้ง3คนได้จิตใจของเขาเป็นประโยชน์มากน้อยขนาดไหนเช่นเราสอนคนที่ไม่มีสติปัญญาเราก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้หรือเราสอนคนหรือสนับสนุนคนที่มีสติปัญญาเต็มที่หรือคนที่อายุสูงแล้วก็ค่อนข้างจะขี้ลืมแล้ว ก็ควรจะให้ความสำคัญใน3คนยังไงหรือเขาจะเสมอกันในสภาวะจิตใจครับผมเท่าที่ผมเข้าใจครับผมจะให้เสมอกันนั้นคงจะยากนะสัตเตกัมมังวิภัสสติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีความแตกต่างกันนะ
ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าก่อนที่จะแสดงธรรมนะด้วยพระเมตตาคุณของพระองค์นะท่านจำแนกสัตว์ที่มีกรรมเป็นของตนมันแตกต่างกันนะจะให้เสมอกันไม่ได้แต่ด้วยความเมตตาเลี้ยงคนที่อย่างที่โยมว่าคนสติปัญญาน้อยนะก็ต้องเลี้ยงด้วยความเมตตานะถ้าเป็นภาษาแบบไทยๆก็เรียกว่าคนน้อยกับคนมากเนี่ยคนมากก็ต้องมีเมตตาต่อคนน้อยน้อยนะเพื่อจะดึงกันสอนให้มีความรักให้มีความเมตตานะเท่าที่จะเอาได้นะจะดึงให้เท่ากันมันคงจะยากเมื่อมันไม่เท่ากันเราจะบังคับให้มันเท่ากันมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วเราก็จะทุกข์ใจเปล่าๆนะฉะนั้นสุดท้ายท่านก็บอกว่าเรามีเมตตาเต็มที่มีกรุณาเต็มที่มีมุทิตาเต็มที่เนี่ยแต่มันความดีเนี่ยมันหรือว่าศักยภาพมันคงจะไม่เท่ากันทั้งหมดเมื่อคนไหนที่มันไม่ได้อย่างที่โยมบอกว่าอย่างคนที่หมดศักยภาพแล้วอย่างอายุมากแล้วเนี่ยกรรมที่ทำมาก็น้อยด้วยกรรมที่ทำให้เกิดสติปัญญาตัวนี้มันก็น้อยด้วยเนี่ยคนลักษณะนี้เราจะไปทุกข์กับเขาก็ไม่ได้แต่ก็เลยให้ใช้อุเบกขาเจ้าตัวนี้นั้นเป็นลักษณะของผู้รู้ลักษณะของพระพุทธเจ้านะท่านจำแนกไว้แล้วจำแนกดังกล่าวเบื้องต้นว่ากรรมย่อมจำแนกคนให้ดีเลวต่างกันเนี่ยหรือสัตว์ทั้งหลายดีเลวต่างกันเนี่ยมันทำมาไม่เหมือนกันนะเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าเราเข้าใจลักษณะนี้เนี่ยเราก็จะทำหน้าที่ของเราโดยถูกต้องเท่าที่เราทำได้กับบุคคลแต่ละคนนั้นอันนี้เราจะสบายใจกว่า ถ้าเข้าใจตามนี้นะ The Buddha taught that all beings are different in the karma that they experience, and so the Buddha, in his compassion, had different methods for teaching different people. For those that have great wisdom, he would teach them accordingly. For those that have very little wisdom and hardly able to understand things which he might explain, he still had a lot of loving kindness for them and inspired faith in them. So it's reasonable to accept differences in different people, different beings who are living according to the different karma. Someone who's fortunate in life should have an attitude of loving kindness and generosity to someone less fortunate. And we should develop the Brahma Viharas, have appreciative joy for one that fortunate than us. And so it's correct to acknowledge that not all beings are equal in the amount of goodness that they've cultivated, and in the karma that they have practiced before. So when we are unfortunate, then we need to equanimity and understand that all beings, including ourselves, receive the results of our own karma. And so the Buddha acknowledged the difference between different beings in that they're experiencing the results of different karma. And so he treated them and taught them differently according to that, understanding that where there are different causes and conditions, then there are different states of phenomena. And in understanding and accepting those differences, then we can all act appropriately.
So this question has come online from Mr. Pramod, and his question is, the question is about reincarnation of Buddha. Buddha was reincarnated as a man and animals many times, but he was reincarnated as a woman, as a princess, only once, as far as I know, the person says. And the question is, why so?ก็คำถามเรื่องที่อดีตชาติของพระพุทธเจ้าเท่าที่โยมที่ถามได้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในอดีตชาติก็เคยเกิดเป็นผู้ชายมาหลายครั้งแล้วแต่เท่าที่ผู้ที่ถามได้เข้าใจว่ามีแค่ครั้งเดียวที่เคยเป็นผู้หญิงมาก่อนในอดีตชาติพอสาเหตุไหนมันเป็นอย่างนั้น ไม่แน่ใจเหมือนกัน มันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เคยใช่ไม่ขอตอบดีกว่าไม่ทำไมโยมได้ข้อมูลมาเลยHe's asking where did the information come from that in former lives the Buddha was only once born as a woman. We're not sure about the whether that's actually correct. เอาปัญหาอย่างอื่นดีกว่าเอาสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ Another question that where we're sure about the background information. What is the meaning of the word religion? And second is Buddhism a religion? ขอโอกาสถามถึง ความหมายของศัพท์ว่าศาสนาหรือ religion หรือถามต่อว่าพุทธศาสนาคือศาสนาในแง่ไหนมันเป็นศาสนาไหมหรือเป็นปรัชญาครับผมอาจารย์เกวลีตอบเลยก็ได้อาจารย์เกวลีตอบเลยก็ได้ Luang Por Jundee has asked myself to answer. My understanding is that the Buddha didn't particularly use the word of religion as we use it today, and also in my translation just now I used the word sasana, and this word does occur, whereas the Buddha Sasana is like what we call the dispensation or the bigger picture of the teachings of the Buddha that he initiated, and there are various aspects of say teaching that a Buddha establishes. For example, there are also elements of like conventional practices where the Buddha, for example, laid down particular rules for monks or ways of interacting with each others. So it's not just a philosophy or a spontaneous realization that the Buddha suggested, but it's a system of training. And in this sense, I would personally say it is more than just simply a philosophy, because there is a lot of direct practices, and there's also practices of veneration, devotion included, which in our modern word of what religion includes is like in later times we include like, or we could define a religion by also having this worshipping or like devotional aspect. Whereas like the rational part of the Buddha's teachings, where we can say the truths about nature that he discovered, that they would be present whether he himself has arisen or not, whether a Buddha arises or not, like Luang Por Liem mentioned this afternoon.
that all things are impermanent, all things are non-self, all things are dukkha, is a fact already, or whether the law of paticcasamuppada exists or not is a law of nature. And this law of nature-ness of the Buddhist religion doesn't depend on the founder or the teacher or the say initiator of this movement of understanding these teachings. So in one way Buddhism is a different religion than other religions, as it refers to some law of nature which we can also many times compare with a scientific way of looking at things, which makes it accessible for people that don't actually want to have much to do with the devotional or say practical aspects of the things that the Buddha recommended us to do. So, for example, we don't have to subscribe to the aspects of the teachings of the Buddha, which have to do much with the conventions, and can still understand the fundamental truths about nature. So in that sense, it's not a cult, in that sense that many religions do compel people to, subscribe to certain practices without realizing the meaning behind them. So it's something that where everybody can always inquire, and this in the way when we study our scriptures, we can see that there is a lot of devotional and conventional order that the Buddha recommended for his disciples or for his followers to keep. And so in that sense, it's not a cultish religion, I would say, and it's a very rational one, and maybe some people can arrive at the same insights without the vehicle of this teaching or dispensation, or without the Buddha Sasana even, but it's the most convenient way that the Buddha himself definitely recommended to use. So this would be my answer for that. Venerable, this morning somebody raised a question. I don't remember the question, but the answer, what Luang Por Liem said was regarding your needs. For example, eat as much as necessary, clothe yourself to as much satisfaction is required. I mean, if you have too many clothes, that can be also suffering. Also about having a house which is a humble abode, and you also mentioned rent a house, rent a car, you'll be more happier. But what happens if you have a car? What happens if you have a house? Should you sell it and go on rental, or I mean, my question is that. ขอการหลวงพ่อโยมถามถึงว่าที่หลวงพ่อได้พูดมาเช้านี้ให้เสนอเราใช้สิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันพอดีเราก็ไม่ต้องมีทรัพย์สินสมบัติเกินประมาณเช่นหากว่าเรามีผ้านุ่งห่มมากเกินไปอาจจะเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์หรือความกังวลก็ได้หรือหากว่าเราก็ยังไม่มีรถไม่จำเป็นที่จะซื้อรถเราอาจจะเช่ารถก็ได้หรือเช่นเดียวกันกับบ้านหากว่าเราก็คำนวณเอาว่าอาจจะดีกว่าที่จะเช่าบ้านตลอดชีวิตซึ่งไม่จำเป็นที่จะซื้อเป็นต้นก็โยมจึงถามว่าโยมเข้าใจอยู่แต่หากว่าเราก็มีทรัพย์สินสมบัติแล้วควรจะทำยังไงควรจะสละไหมหรือควรจะใช้ต่อครับผมหลวงพ่อเมตตาตอบขยายความต่อให้ผมไหมหลวงพ่อ
ครับครับขอโอกาสครับ จริงๆมันไม่ใช่ปัญหาตรงนั้นหรอก มีมากก็เป็นประโยชน์มากเพราะเรานั้นเข้าใจว่าสิ่งนี้มันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยนะปัจจัยเครื่องอาศัยนี่กำลังที่หลวงพ่อท่านพูดท่านหมายถึงว่านะถ้าเราเข้าใจแล้วนะมันก็เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตนะแล้วก็มันเป็นตัวปัจจัยหนึ่งที่เป็นกำลังสนับสนุนกุศลของเราด้วยนะมีมากอย่างที่พูดว่าเราไม่ได้เป็นทาสของมันแต่เราเป็นนายของมันเราสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยของมันได้อย่างสะดวกนะจะเรียกอีกอย่างได้ว่าเราเอาโลกิยทรัพย์นั้นนะมาแปลสภาพให้เป็นอริยทรัพย์ได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นนะไม่ใช่ว่าเอาไปทิ้งนะมีมากท่านให้ใช้ให้พอดีให้น้อยแล้วโยนทิ้งหมดนั่นไม่ใช่ผู้มีปัญญาย่อมแปลสภาพโลกิยทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์ได้ยิ่งเพิ่มพูนบารมีได้เร็วขึ้นนะสำหรับคนไม่มีนั่นแหละสำคัญมีน้อยแต่ทะเยอทะยานมากอันนี้มันจะเป็นปัญหานะมีน้อยก็อาจจะกินน้อยหน่อยนะใช้น้อยหน่อยให้รู้จักความพอเหมาะพอดีกับตนเองนะอย่างหลวงพ่อชาว่าถ้ามันทุกข์เรามีน้อยก็ต้องขยันมากขึ้นนะขยันแล้วก็ใช้ให้เป็นให้ได้มาแล้วก็ใช้ให้พอเหมาะพอดีกับภาวะของตนเองนะไม่ใช่ว่าจะไปแข่งขันกับคนที่เขามั่งเขามีอย่างนั้นนะมันก็ลำบากตนเองนะแล้วก็กลายเป็นหนี้เป็นสินนะทุกข์ใช่ไหมเป็นทุกข์เนี่ยเพราะความสุขจริงๆนั้นไม่ใช่ว่าเป็นหนี้เป็นสินในอันนั้นเอาโลกมาเป็นเครื่องวัดมันก็เลยลำบากเนี่ยถ้าเราเอาธรรมแล้วนะอยู่อย่างสันโดษอย่างมักน้อยก็คือพอเหมาะพอดีกับภาวะของตนเองอันนั้นมันก็สบายกว่าแต่มีมากก็เก็บไว้นั่นแหละอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งนะเอาต่อเอาอริยทรัพย์ให้มันเร็วขึ้นให้มากขึ้นกับได้ประโยชน์มากขึ้น นะSo there's no need to get rid of the things that you have, but what that means is to understand that the things that we're using are simply supports for our life and also supports for our practice, and to be the master of the things that we have and not a slave to the things that we have. And so we can actually use the material things that we have, the means and the support that we have in this world as a support for our practice and our cultivation of spiritual qualities. And so this means we're exchanging or using worldly wealth to generate a noble wealth and to develop our spiritual goodness and potential. So what it also means is if we don't have many possessions, then we should know our means and not exceed our means. So not try to live beyond our means, not try to live beyond what we actually have. And we may have to be extra diligent in seeking out what we need if we don't have those things that we need for life. But the important thing, whether we have a little or have a lot, is to understand that food, clothing, shelter, and all kinds of possessions are just there to support our life, and they're there to support our practice. So we don't need to think about how to get rid of those things that we have, but rather we should think about how we can use them to support a good life and a good practice. Because we're not seeking to compete with anyone else to get a lot and have a lot of things.
But what we are seeking for in this world is the Dhamma, and that's our true goal. And so we're content with little, but if we have a lot, then we should use it, not throw it away. Because if we have a lot of resources, then that means there are certain things that we can practice better, and there's certain things that we can achieve more quickly, and there are greater benefits that we can achieve in the cultivation of spiritual qualities like generosity and so on. It's simply a matter of knowing how to use that wealth for a good result, and not being attached and a slave to our possessions, but being the master rather than being the slave or the victim. สุขเพราะมีทรัพย์สุขเพราะการจ่ายทรัพย์บริโภคสุขเพราะความไม่เป็นหนี้สุขเพราะการงานที่ปราศจากโทษเห็นไหมจะรวมถ้าใช้เป็นอะไรเป็นมันก็เป็นความสุขได้สี่ข้อนั่นแหละขยายเอา And in fact, the Buddha taught this directly and spoke directly to this question. He said that there are 5 kinds of happiness for a lay person. One can be happy for having sufficient material things. And that's the happiness, which is the absence of suffering of not having those things. One can be happy through using those things skillfully. And one can be happy through sharing those things with others. One has happiness through not being in debt. And one has happiness through living a good and correct livelihood. And so these are not only useful things, but they're a cause for happiness. How to know we are practicing right? ขอการเรารู้ได้ยังไงว่าเรากำลังปฏิบัติถูกต้องครับผม ถ้ากิเลสมันลดลงมันก็ถูกต้องนะเนี่ยถ้ามันเพิ่มขึ้นมันก็ไม่ถูกนี่พูดภาษาง่ายๆนะภาษาง่ายๆดูในใจนะความโลภลดลงไหมปฏิบัตินะความโกรธลดลงไหมความหลงลดลงไหมถ้ามันลดลงนั่นแหละถูกต้องไม่ต้องไปถามใครนะถ้ามันเพิ่มขึ้นปฏิบัติแล้วเพิ่มขึ้นน่ะนั้นผิดแน่นอนไม่ถูกต้องแน่นอนนี่พูดภาษาธรรมดาให้เข้าใจ Well, it's a simple matter of looking to see if one is developing in a good way or a bad way. Is greed increasing or decreasing? Is the experience of hatred increasing or decreasing? And delusion or increase? Is it increasing or decreasing? So if these things are decreasing, then you can be sure that the practice is correct because you're getting the right results. And also, if it's getting the wrong results, then you can be sure that it's wrong, to put things in simple terms. เพราะมีคำสนับสนุนพระพุทธเจ้าคำสอนของพระองค์เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติเนี่ยแม้จะปฏิบัตินั่งสมาธิทั้งคืนหรือเดินจงกรมทั้งคืนไม่กินไม่นอนก็ตามนะความเพียรที่เราบำเพ็ญตบะนะจะบำเพ็ญเคร่งครัดขนาดไหนก็ตามถ้าอกุศลเจริญขึ้นมันไม่ลดลงอันนั้นผิดแน่นอนนะแต่ถ้าอกุศลมันลดลงไปแต่กุศลเพิ่มมากขึ้นนั่นคือความถูกต้องแม้จะไม่ได้นั่งตลอดทั้งวันทั้งคืนหรือเดินตลอดทั้งวันทั้งคืน
อยู่ธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามีสติดูจิตใจของตนเองนะควบคุมจิตใจของตนเองรู้จักกุศลอกุศลอกุศลเป็นสิ่งที่ควรละก็เพียรเพื่อละอกุศลกุศลเป็นสิ่งที่ควรเจริญบำเพ็ญให้เกิดขึ้นก็หล่อเลี้ยงให้มันเกิดขึ้นนั่นแหละคือความถูกต้องนั่นคือเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องจริงๆAgain, the Buddha also spoke very directly to this question. He said that even if one meditates all night, sitting meditation or walking meditation all night, or whatever strict ascetic practices one takes upon oneself, if through the course of that night of strict practice, one increases the unwholesome, the akusala, and one decreases the wholesome, the kusala, then one can be quite sure that one has been practicing wrongly. At the same time, if no matter how one spends that night, even if one is simply just being mindful in one's regular activities, watching over one's mind and controlling one's mind, careful to see that the akusala is decreasing and the kusala is increasing, then that means one is practicing correctly. And so that is what the Buddha taught as right effort. It's for the sake of the increase of what is wholesome and the decrease of what is unwholesome. So there is this question which has come online. So the person says that as we progress on the path, we become more polite, humble and submissive. However, sometimes people in the outer world consider this as our weakness and start taking advantage of these qualities, maybe by being nasty or exploiting us. How to strike a balance in such a case that we can still retain these qualities without getting exploited? ขอการผู้ที่ถามว่าเมื่อปฏิบัติก็มักจะมีการเพิ่มขึ้นของความอ่อนน้อมถ่อมตัวความเคารพหรือความอ่อนโยนต่อคนอื่นแล้วก็สถานการณ์ชีวิตต่างๆแต่บางครั้งสิ่งแวดล้อมก็ไม่เอื้ออำนวยแล้วมากกว่านั้นคนจะเอาเปรียบเรายิ่งเอาเปรียบตอนที่เรามีความอ่อนน้อมเพิ่มขึ้นความอ่อนโยนเพิ่มขึ้นความละเอียดของเราจะเพิ่มขึ้นแต่คนอื่นจะหยาบกว่าแก่เราควรจะหาความสมดุลยังไงเพื่อจะไม่ได้เป็นเหยื่อของคนอื่นที่เอาเปรียบของเราช่วงที่เรากำลังปฏิบัติในลักษณะว่าอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตัวครับผมถ้าพูดกับเรื่องของคนพาลเนี่ยมันก็ความพาลเป็นสันดานประจำของเขาเนี่ยแต่ถ้าเราเชื่อมั่นในความดีของเราเนี่ยเราก็ต้องรักษาความดีของเราเนี่ยแต่ว่าการสมาคมเนี่ยอยู่ในโลกปัจจุบันนี้มันก็น่าเห็นใจอยู่หรอกเนี่ยปัญหาอย่างที่โยมพูดเนี่ยก็เจอทั่วไปที่เมืองไทยก็เจอเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันมีทางเลี่ยงมันไม่ได้เจออย่างนั้นทุกคนเสมอไปหรอกนะอาจจะเจอเป็นบางครั้งบางคราวนะแต่ว่าผู้ที่มีจิตใจดีเหมือนเราเนี่ยรักความอ่อนโยนรักความอ่อนน้อมรักความดีมันมีพลังเยอะแยะอยู่นะแต่ถ้าคนประเภทนั้นก็เลี่ยงเอาหน่อยหาวิธีใช้สติปัญญาเอาหน่อยรู้จักบุคคลเนี่ยในลักษณะของผู้รู้เนี่ยรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลรู้จักประชุมชนเนี่ยตัวนี้ถ้าแยกแยะออกได้เราก็จะอยู่กับสังคมได้เนี่ยเห็นไหมหลักของสัพปริสธรรมรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณ
รู้จักการรู้จักบุคคลรู้จักประชุมชนเนี่ยนี่มันต้องมีหลายๆอย่างที่ทำให้เราแยกแยะออกนะเพื่อให้เรามีช่องทางเดินว่างั้นเถอะนะในโลกแม้มันจะวุ่นวายแต่มันมีช่องทางเดินอยู่เหมือนกันนะถ้าเรารู้จักเลือกทางเดินนะนี่หรือคิดอีกอย่างหนึ่งว่าอันนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้รับให้ปัญญาของเราให้มันคมขึ้นได้นะเราก็รักษาความดีแล้วอย่าเอาความดีของเราทิ้งไปหรือแม่มันหายไปเพราะเหตุแห่งคนนั้นนะแต่เราก็ต้องรักษาความดีของเรานะแต่มันไปตรงนั้นไม่ได้เราก็หาทางออกไปทางหนึ่งนะให้มันได้ในโลกนี้ If we are treated badly like that, then that means that we have come into contact with foolish people, and that may happen from time to time. But we should still have faith in our own goodness, and the important thing is that we maintain and protect our own goodness. Because although it can be the case that one is treated badly or taken advantage of occasionally because of coming into contact with bad people, then we should remember that it's not always the case. Because if we have a good heart and we have goodness and good qualities, then we're actually more likely to attract people who have good qualities. We're more likely to be treated well than to be treated badly. And we're also on the path of developing our mindfulness and wisdom, which means we get better at choosing who we associate with. And we know that the Buddha taught us to associate with the wise and avoid the company of fools. So as we cultivate more goodness, then we learn the Saparissa Dhammas. We attain to these 7 qualities that the Buddha taught, of knowing and understanding causes, and knowing and understanding effect, knowing and understanding oneself, knowing and understanding the right amount in all that one uses, knowing and understanding the right time for the things that one does and says, and knowing and understanding the society that one is within, and knowing and understanding the individuals that one comes into contact with. So actually, these good qualities that we develop of humility and politeness, these qualities of being humble and respectful, those are good qualities which will lead us more and more to good contact with good people. And of course, from time to time in this world, we'll come into contact with fools. But when that happens, then that's the time just to realize that this is the result. This is something that happens in this world with its variety and its different people. When we can't change others, that's when we need to practice equanimity and accept and understand that those people are also the owners of their own karma. Handamayam Dhammakathaye Sadhukaram Dadamase.
Everybody can आप भगवान जी से मिल रखे हो क्या? Okay, so the question is, have you encountered God? Is it? Yeah. Okay. Do you want the mic, Bante? You know how to answer. Bante, just to set the context in what context he's asking. Actually, we live in a society where we live in gods. There are so many devtas and around, and in our family, in our society, wherever we go, there are so many temples. Even in our own family, we pray God during prayers. So when we are coming here, he asked, "Where are we going?" I said, "We are going to meet monks." Then we said he asked who are monks. Monks are the highest in the experience. Then he said, it's a God. Yeah, because this is the what context we set in our family. So it's just not his question, it's in our question also, in the Buddhist context, how do we teach our kids what is God, and how do they learn what they should go for their understanding. It's a question which has many facets for someone who was raised in a Catholic family. If you probably may not know much about the Christian concept of God. So I'm kind of crossing a lot of crossing a lot of cultures and belief systems, if you like. I think that we've heard many things tonight, and I think that the important thing, or what is appealing about Buddhism, is that it returns to you and your behavior and your effect on the people around you, and it's very practical. And so, in all cases, whatever your belief is, whether you believe in one God or many gods, ultimately, really, it's your actions, your behavior, your character, and developing those things. And whichever God you believe in, if they're worth your devotion, then they would encourage you to become a good person, to look after the people around you, and always try to put down your defilements, put down your greediness. Any system, any spiritual path worthy of your commitment is going to encourage those things, and that's what's important, to teach your children to be a good person. And what you believe beyond what you can prove is kind of, you have to look at the effect that has on your character and your behavior. Perhaps you can explain that to him. Okay. पाँच मिनट के विश्राम के बाद वापस यहाँ आ जाएंगे हिंदी में अनुवाद के लिए.
हेलो। आज शाम के सत्र में लुंग पोर लियम ने लुंग पोर जुंदी को आग्रह किया कि जो प्रश्न उत्तर यदि किसी के प्रश्न हो तो उनके जवाब दें। तो सबसे पहला प्रश्न मेघता ने पूछा। उन्होंने कहा कि कल लुंग पोर ने कहा था कि यदि कोई आसक्ति नहीं हो किसी भी भौतिक या चैतसिक पदार्थ या वस्तु के प्रति, तो यदि नहीं हो, लेकिन जब हम नया जन्म लेते हैं तो फिर हमारा कर्म तो साथ जाता ही है। ऐसा क्या है जिसके प्रति हम आसक्त हैं और जिसके वजह से ये पुनर्जन्म होता है और कर्म साथ जाता है। लुंग पोर ने कहा कि यदि चित्त की बात करें तो चित्त जो है वो लोक धम्मों से के साथ आसक्त होता है और इसी से कारण बनते हैं पुनर्जन्म के। तो जब हमारे कोई भी आसक्तियां जो हैं उनका शमन हो जाएगा तो फिर उसी के साथ पुनर्जन्म का भी शमन हो जाएगा, क्योंकि कारण परिणाम की ही ये एक व्यवस्था है। आर्य जनों की भाषा में इसे कहा जाता है भव का अंत होना, या भव का अंत होना जो है उसका त्याग करना है। जैसे हम ये करते जाएंगे वर्तमान में तो वैसे वैसे हम हल्के होते चले जाएंगे और भी हमारा होगा। वर्तमान के कर्म को ही जान सकते हैं, उसके हम मालिक हैं और उसी से ही हमारा भविष्य बनता है। तो लुंग पोर ने कहा कि हम सत्कर्म करें और इस बात का ज्यादा चिंता ना करें कि भविष्य का क्या होगा। अभी सत्कर्म करेंगे तो भविष्य अच्छा होने ही वाला है। तो आगे अब भविष्य में कितना हमें दुख होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, वो पच्चुपन्ना धम्मा इस क्षण के धर्म पे वो निर्भर करता है। जब हम चीजों पे बहुत अपनी पकड़ जकड़ लेते हैं तो फिर वही दुख का कारण बनता है। इसलिए हमें चीजों को पकड़ना है या हाथ में लेना है, लेकिन बहुत जोर से नहीं पकड़ना है। जैसे एक साधारण सा उदाहरण है, ग्लास को अगर हमने उठाया तो इस्तेमाल करने के लिए उसे उठाया, लेकिन हमें ये क्षमता होनी चाहिए कि जब चाहे उसे नीचे रख दे। जब उठाया है तो हमारे हाथ में भार है और जब जैसे ही उसे नीचे रखा वैसे ही हल्कापन आ गया। तो जब हम उठा के चीजों से चिपक जाते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं तो अपने आप ही भार होता है, और जब उन्हें लेट गो कर देंगे, नीचे रख देंगे तो हल्कापन आ जाएगा। तो इस लोक में जो कुछ भी है वो तब तक हमारे लिए भार है जब तक कि हम उसे उसका उपादान बना लेते हैं, उस पर क्लिंगिंग कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसे अपने छोड़ देंगे, अपनी पकड़ ढीली कर देंगे, तो हम उस उपादान से भी मुक्त हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न पूछा था कि क्या स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए ऑर्डिनेशन की व्यवस्था इस ट्रेडिशन में नहीं है, तो वो क्यों नहीं है? तो इस पे भंते ने कहा कि ये एक बहुत ही समय से ये एक विषय रहा ही है थेरावादा बुद्धिज्म के अंदर कि भिक्खुनी ऑर्डिनेशन नहीं होता, और उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि ये कब जाके इसका कोई समाधान होगा या कोई ये प्रैक्टिस चालू होगी। तो यदि हम बात वापस अपनी साधना पर लेके आ जाएं तो हमें अपना क्या हमारी स्टेटस है, क्या आइडेंटिटी है, हम भिक्खुनी बने हैं कि नहीं बने हैं, स्त्री हैं कि पुरुष हैं, इन बातों से हमारा क्या लेना देना है, क्योंकि ये सभी भव तन्हा का ही एक प्रतिरूप है। तो भगवान की जो शिक्षा है वो बिना किसी स्त्रीलिंग पुल्लिंग के ऊपर है, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं। हम सुपटिपन्नु बने, यानी कि सुपटिपन्नु शब्द के अंदर ये नहीं आता है, वो कोई लिंग को नहीं उसके अंदर कहा गया है कि ये पुरुष के लिए या स्त्री के लिए, वो किसी के लिए भी अवस्था उपलब्ध है। उसी तरह उजुपटिपन्नु जो वो लोग, वो श्रावक संघ जो कि सीधे रूप से साधना करते हैं, सामीची पटिपन्नु जो कि सही रूप से साधना करते हैं।
इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अजान केवली ने भी कुछ अपने बिंदु इस पे रखे। उन्होंने कहा कि जब ट्रेडिशन की बात हो रही है तो पूरे जो एक ये बहुत बड़ा ट्रेडिशन है और इसके अंदर सौहार्द स्थापित बनाए रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। यदि आप विदेशी हैं या आप उस एक बड़े समूह के अंदर एक छोटा समूह है तो आपको देखना होता है कि आप कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि संघ में जो सामंजस्य है वो भंग हो किसी भी प्रकार से। ये सब होते हुए लुंगपोर सुमेधो जो हैं उन्होंने स्त्रियों के लिए कुछ प्रावधान किए हैं कि जहाँ पे उन्हें एक पूर्ण जो समना प्रैक्टिसेस होते हैं उसका वो करने का मौका मिलता है, लेकिन वो एक अलग रूप के अंदर मिलता है। शीलाधारा ऑर्डिनेशन होते हैं जहाँ पे स्त्रियां 10 शील धारण करती हैं, भिक्षुओं की तरह वो भी धन नहीं रखती हैं, और जैसे ये भिक्षाटन के लिए भिक्षु जाते हैं उसी तरह स्त्रियों को भी ये सुविधा दी गई है और वो भी चीवर धारण करती हैं। यहाँ पे धम्मारामा में ही पिछले साल अजान सुंदरा आई थी जो कि 40 साल से जिन्होंने चीवर धारण किया हुआ है। तो अजान केवली ने ये भी माना कि हाँ ये अभी स्त्रियों को पूरा एक जो भिक्षुनी का स्टेटस है वो नहीं दिया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका पूरा इस तरफ ध्यान है कि अपॉर्चुनिटीज में मौकों में कोई भी कमी ना रह जाए। जो भी कुछ प्रैक्टिसेस पुरुषों को उपलब्ध है वही स्त्रियों को भी उपलब्ध रहें। उसके बाद एक प्रश्न था जिसमें इन्होंने कुछ इस प्रकार कहा कि कोई एक व्यक्ति है जो कि पूरी तरह परिपक्व नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति है जो पूरी तरह परिपक्व है, और एक कोई तीसरा ऐसा व्यक्ति है जो अपनी परिपक्वता छोड़ चुका है या जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सभी व्यक्ति अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं, चित्त से, वाणी से या काया से। तो इनके ये जो कर्म किए जाते हैं वो सती पन्या के आधार पे कॉन्शियसली, कुछ सबकॉन्शियसली, कुछ अनकॉन्शियसली, बेहोशी के मोह के अवस्था में किए जाते हैं। तो इन सब का कैसे ये निर्धारित किया जाए कि इनके कर्म का क्या प्रतिफल होगा। लुंगपोर जुंदी ने कहा कि भगवान ने हमें सिखाया कि जो भी प्राणी हैं वो अपने अपने कर्म के अनुरूप अलग अलग होते हैं। सभी प्राणी अपने कर्म के स्वरूप उसी के फल के अनुसार भोगते हैं। तो भगवान ने अपनी करुणा के अंदर ये देखा कि यदि प्राणी अलग अलग हैं तो उन्होंने उनको अलग अलग प्रकार से शिक्षित किया। कोई जो अधिक प्रज्ञा वाला व्यक्ति है उसे अलग प्रकार से सिखाया, जिसकी प्रज्ञा कम है या जो कम इंटेलिजेंट है उसके प्रति पूर्ण करुणा रखते हुए उसे दूसरे तरीकों से सिखाया, शिक्षा दी। तो हम लोगों के लिए ये ऐसी एडवाइस दी जाती है कि हम सभी को स्वीकार करें और ब्रह्म विहारों की का अभ्यास करें कि जहाँ पे यदि हमसे कोई कम फॉर्चून वाला व्यक्ति है उनके प्रति हम मेत्ता रखें, करुणा का भाव रखें, और कोई अधिक अगर हमसे अधिक किसी ने पाया है तो हम उसके प्रति मुदिता का भाव रखें। हमें समता में स्थापित रहना है और ये समझते रहना है, ये याद दिलाते रहना अपने आप को कि सभी अपने कर्म के अनुसार ही पाते हैं। ऑनलाइन एक प्रश्न किया गया था श्री प्रमोद ने कि बोधिसत्व, उन्होंने कहीं पे ऐसा पढ़ा था या कुछ उन्होंने रेफरेंस दिया कि बोधिसत्व जो थे वो हमेशा उनका जो रीइंकार्नेशन, उनका पुनर्जन्म हमेशा या तो पुरुष स्वरूप में हुआ या किसी जानवर के स्वरूप में कई बार हुआ, परंतु स्त्री के स्वरूप में केवल एक ही बार हुआ, एक राजकुमारी के रूप में। तो ऐसा क्यों था? इस पे लुंग पोर जुंदी ने कहा कि ये नहीं पता कि ये जो ये इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ से आई है। तो जब ये नहीं पता कि ये कहाँ से आई है और ये इसमें कितना सत्य है, तो फिर ऐसा कोई दूसरा प्रश्न पूछे जिसके बारे में हमें ज़्यादा सत्यता जिसकी हमें पता हो। उसके बाद हम दूसरे प्रश्न की तरफ चले गए। प्रश्न था कि ये जो शब्द है धर्म, रिलीजन, उसका क्या अर्थ है और क्या बुद्धिज्म जो है वो एक रिलीजन या धर्म है। तो यहाँ पे क्योंकि हम धर्म शब्द को बुद्धिज्म में भी यूज़ करते हैं, वहाँ पे धम्म बात हो जाती है, तो मैं शब्द रिलीजन का ही इस्तेमाल करूँगी ताकि हमें पता रहे हम जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं।
इसका जवाब अजान केवली ने दिया। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने रिलीजन का कोई ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था जिस उस स्वरूप में जिस स्वरूप में ये आज इस्तेमाल किया जाता है। धर्म शब्द तो पहले से भी रहा है, लेकिन आज उसका स्वरूप बदल गया है। तो अजान केवली जब धर्म की बात करते हैं, भगवान की शिक्षा की बात करते हैं, वो उसे बुद्ध शासना कहते हैं। और उन्होंने कहा कि इसके अलग अलग आयाम हैं। एक आयाम जैसे इसमें रीति रिवाज का भी है, क्योंकि रिलीजन में भी रीति रिवाज होता है, इसलिए उन्होंने इस बात को हमारे सामने रखा। जैसे कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जैसे कि जो भिक्खु भिक्खुनियां हैं उनके लिए कुछ नियम इत्यादि होते हैं। तो लेकिन ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष ये है कि जो भगवान की शिक्षा है, बुद्ध शासन जो है, वो एक दर्शन से कहीं अधिक है। इसके अंदर ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस तो हैं जो श्रद्धा के या प्रार्थना के इस प्रकार के कुछ भाग इसके अंदर हैं, जैसे हमें रिलीजन में भी मिलते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा भाग जो है वो है विवेकपूर्ण होने का, रैशनल पार्ट का, जो कि प्रकृति के नियमों पर आधारित है। बुद्ध हो कि नहीं हो, बुद्ध शासन हो कि नहीं हो, ये प्रकृति के नियम कभी नहीं बदलते, जो कि अनिच्छ, दुख और अनात्ता का स्वभाव या पटिच्छ समुत्पाद का स्वभाव। ये किसी व्यक्ति या किसी बुद्ध के होने पर निर्भर नहीं है, क्योंकि ये जो प्रकृति के नियम हैं इन्हें वैज्ञानिक स्वरूप में देखा जा सकता है। तो भले ही कोई इन रीति रिवाजों को, व्यवहारिक जो तौर तरीके हैं जो बुद्धिस्ट लोग फॉलो करते हैं, उनको अगर कोई व्यक्ति ना भी माने तो भी वो प्रकृति के नियमों को समझ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही विवेकपूर्ण शिक्षाएं हैं। यहाँ पे ये कोई पंथ नहीं है, कल्ट नहीं है, और पंथों की तरह की जहाँ पे ऐसा एक माना जाता है, यदि आप उस कल्ट का भाग हैं, कि आपको वहाँ पे जो कुछ नियम इत्यादि हैं उनको बिना समझे या बिना उन पे प्रश्न उठाए ही आपको उनको स्वीकारना ही पड़ेगा। यहाँ पे तो भगवान की शिक्षा में इंक्वायरी को या प्रश्न उठाने को और चीज़ों को अपने अनुभव के आधार पर समझने को महत्व दिया गया है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो कि बुद्ध शासन को ना माने या इस माध्यम को, आर्य अष्टांगिक मार्ग के माध्यम पे को ना सीधे तौर पर इस्तेमाल करते हुए फिर भी वो उन्हीं जो सत्य हैं उन तक पहुंच सकता है। अगला प्रश्न ये था कि दिन में जो बात कही गई थी कि कम खाएं या कम मात्रा में खाएं, उतना ही इस्तेमाल करें, उतना ही कंज्यूम करें, पहने ओढ़ें जितना कि आपकी आवश्यकता है, और आपके रहने का स्थान भी साधारण सा हो। तो यदि और ये भी कहा गया था कि आप किराए के मकान में आकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि आपके पास आप पहले से ही किसी मकान या कार आप इसके स्वामी हैं, तो अब आप क्या करें? लुंगपोर ने कहा कि हमें इन चीज़ों से छुटकारा पाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमें ये समझना है कि ये चीज़ें हमारे जीवन के लिए किस प्रकार सहायक हैं और साधना के लिए किस प्रकार सहायक हो सकती हैं। तो ये ऐसे हो गया कि हम अपनी लौकिक संपदा को, अपनी आध्यात्मिक संपदा को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाएं। हमें ये नहीं करना है कि हम हमारे पास जो साधन है उससे अधिक के अंदर जीने का प्रयास करें। जैसे कहते भी हैं, पैर उतनी फैलाएं जितनी आपकी चादर हो। तो भले ही हमारे पास कम हो या अधिक, हमें ये समझना है कि हमारी जो संपत्ति है, संपदा है, वो हमारे जीवन और हमारी साधना के लिए सहायक बने, और हमें इन चीज़ों से छुटकारा पाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो प्रयास हैं वो किसी स्पर्धा के लिए नहीं है, कि इसलिए हम अपनी संपदा नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि संपदा जो है हमारे पास उसका हम इस्तेमाल धर्म के अभ्यास के लिए कर रहे हैं। बल्कि यदि आपके पास संपत्ति है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आप और अच्छे तरीके से साधना कर सकते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी आपके लिए सहज हो जाएंगी, जैसे कि उदारता का भाव जो है, क्योंकि तब आपके पास संपत्ति है लोगों से बांटने के लिए। ना सिर्फ ये संपत्ति जो है वो हमारे लिए उपयोगी हो सकती है, बल्कि ये सुख का कारण भी बन सकती है। भगवान ने ऐसे 5 प्रकार के सुख बताए हैं एक गृहस्थ के लिए, कि उसके पास यदि
जो भौतिक संपदा है वो उचित मात्रा में हो, वो उसे स्किलफुली कुशल रूप में इस्तेमाल कर पाए, वो उसे दूसरों के साथ उसका सहभाग भी कर पाए, वो उसके ऊपर कोई कर्ज इत्यादि ना हो और उसकी जो जीविका हो वो सम्यक आजीविका हो, तो ये सुख के कारण भी बनते हैं। अगला प्रश्न था, हमें कैसे पता चले कि हमारी साधना ठीक ठाक हो रही है कि नहीं। लुंगपोर ने कहा कि बहुत ही आसान तरीका है इसको मापने का, कि हमें ये देखना है कि हमारा जो लोभ, द्वेष, मोह ये है, ये सब बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। भगवान ने ऐसा भी कहा है किसी सुत्त में कि यदि कोई व्यक्ति सारी दिन रात साधना करे और बहुत ही एक्सट्रीम्स में, अतियों में जाकर भी साधना करे तो भी, लेकिन यदि उसने उस रात जिस रात उसने ऐसी साधना करी हो उसमें उसने अपने अकुशल कर्म को बढ़ाया और कुशल को कम किया हो, तो ये साधना सही साधना न होके गलत साधना है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति अपनी रात्रि कैसे भी बिताए, लेकिन यदि उस समय वो अपने चित्त की अवस्थाओं को जान रहा था और अपने अकुशल चित्त जो चेतनाएं हैं उनको कम करते हुए कुशल को बढ़ाते जा रहा था, तो वो एक सही रूप में साधना कर रहा है। अगला प्रश्न ये था कि जैसे जैसे हम मार्ग पर प्रगति करते चले जाते हैं तो उससे हम अधिक पोलाइट बन जाते हैं, हम्बल बन जाते हैं, तो ये जो गुण हमारे अंदर आ रहे हैं ये कई बार दूसरे लोग इसके वजह से हमारा शोषण करने लगते हैं। कैसे हम इसके अंदर एक संतुलन स्थापित करें। लुंगपोर ने कहा कि यदि कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करे तो ऐसा होता ही है कि कभी कभी हम मूर्ख व्यक्ति जो हैं या मूर्ख व्यक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं, तो हमें अपनी जो अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छे गुण हमने अपने अंदर भावित किए हैं, उनके अंदर हमें श्रद्धा विश्वास बनाए रखना है और उन गुणों को भी बनाए ही रखना है। बल्कि यदि हमारे अंदर अच्छे गुण हैं, सद्गुण हैं, तो फिर धीरे धीरे ऐसे लोग जिनमें सद्गुण हैं वो भी हमारी तरफ सहज ही आकर्षित होंगे। और सती पन्या से हम ये भी देख पाएंगे कि हमारे अंदर ये बल भी जागेगा कि हम, या ये समझ भी जागेगी कि हम भी लोगों में चुनाव कर पाए कि कौन लोग ऐसे हैं जो प्रज्ञावान व्यक्ति हैं, तो हम ऐसे लोगों के साथ अपना संपर्क और बढ़ा पाएंगे। और 7 बातें इन्होंने बताई यहाँ पे कि जो समझ बढ़ाने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हमें जाननी है और समझनी है, वो ये है कि किन चीज़ों के कारण होते हैं, उनके क्या परिणाम होते हैं, स्वयं को समझना, सही मात्रा को समझना, सही समय को समझना, समाज को समझना और उन लोगों को समझना जिनके संपर्क में हम आते हैं। तो जो भी गुण सद्गुण हम अपने अंदर भावित करें वो हमें सहज ही सद्गुणी लोगों की तरफ ही लेकर जाएंगे। और समय समय पे हम कुछ मूर्ख लोगों से भी मिलते रहेंगे, तो हमें समझना है, फिर से उन्होंने याद दिलाया कि हमें तो जानना ही है कि संसार में हर ही प्रकार के व्यक्ति हैं और सभी कोई अपने कर्म के मालिक हैं और इसीलिए अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, तो हमें अपनी प्रज्ञा के अनुरूप ही उनके साथ व्यवहार करना है। हेलो, एक आखिरी सवाल था, एक बच्चे ने पूछा था ईश्वर के बारे में। वो एक ऐसी किसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे कई देवी देवताओं के मंदिर इत्यादि हैं, तो उनके अंदर ये बड़ी उत्कंठा थी ये जानने की कि क्या ईश्वर हैं। उनके जो फादर हैं वो उन्हें यही कहकर लाए थे कि यहाँ पे ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो कि ईश्वर के निकट हैं, या ऐसा मैंने समझा। तो इस पर तन भूरिपन्यो ने कहा कि वो खुद एक कैथलिक परिवार में पले बड़े हैं, तो उन्हें मतलब जो वो बात कहेंगे वो हो सकता है कि किसी की संस्कृति या किसी के जो बिलीफ सिस्टम है उसके पार जाके वो बात कर रहे हों। उन्होंने ध्यान हमारा
वापस बुद्ध की भगवान की शिक्षा के ऊपर ही लेकर आए कि जो भगवान की शिक्षा है वो हमें स्वयं की तरफ लाती है, व्यक्ति को उसके खुद की तरफ, खुद के व्यवहार की तरफ, खुद के आचरण की तरफ, और उस आचरण का खुद पे, स्वयं पे और दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसकी तरफ लाती है। तो ले दे के बात अपने कर्म पर ही आती है कि आप किसी भी भगवान को, देवी देवता इत्यादि को माने, यदि वो जो भी कोई प्रणाली को आप में आपकी आस्था है या भगवान में, ईश्वर इत्यादि में आपकी आस्था है, वो आपका आध्यात्मिक मार्ग जो है वो यदि आप इतना उसके अंदर अपना समय और एफर्ट डाल रहे हैं तो वो एक ऐसा, कम से कम ऐसा मार्ग तो हो या जो कि आपको एक अच्छा व्यक्ति बनने के अंदर सहायक हो और उसी की शिक्षा देता हो।